Hello friends, I'm so sorry for taking so long to make this video. The heat wave, it's killing everyone, trust me. It's bad. It's very hot out here. Alright, anyway, so we were talking about prepositions. So we have almost talked about most of the prepositions. However, there are some or maybe one or two prepositions I would say people get confused. First comes is to. How and where do we use this preposition to? Now, let me explain it to you. To can be used whenever you are going to perform an activity or going to do an activity. For example, play, eat, dance, watch, whatever. So there is a body movement required, or any part of your body is utilized or used. So in that case, we will use to. For example, I am going to play, I am going to watch a movie, I am going to eat my meal, dinner, breakfast, whatever it is. I am going to dance. This is the first usage of the preposition to. So preposition to को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं? जब हम कहीं जा रहे हैं, किसी direction में जा रहे हैं. So whenever we are going to a direction, like I am going to Mumbai, or I'm flying to Mumbai, I'm going to the market, I'm going to meet my friend. So in all these things, again, same चीज, एक्टिविटी. आपका काम आ रहा है, आपको चल के जाना है या फ्लाई होके जाना, घर से तो पहुंच नहीं सकते हो, एक्टिविटी चाहिए. सो एक्टिविटी और डायरेक्शन यहाँ दोनों इंक्लूड हो जाते हैं. सो आप डायरेक्शन को भी किसी को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो टू योर लेफ्ट, गो टू योर राइट. सो वेन एवर यू आर पॉइंटिंग अ डायरेक्शन टू समवन, देन ऑल्सो यू विल यूज दिस टू. ओके, नाउ द थर्ड इज टाइम. सपोज मुझे किसी ने पूछा कितना टाइम हो रहा है, तो मैं बताऊंगी 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं. सो व्हाट विल आई से इट इन इंग्लिश? इट्स 2 to 10, ओके, और इट्स 2 minutes to 10. सो हमको जितना भी फ़र्क है, हिंदी में हम लोग इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं. सो इट्स 2 minutes to 10. इट्स 9:45, दैट मीन्स 15 मिनट बाकी हैं. सो ऐसे हम लोग टाइम के लिए भी बोलेंगे. ओके, सो व्हाट आर द अदर यूसेज ऑफ टू? द थर्ड वन वी कैन से व्हेन वी यूज फ्रॉम एंड टू. सो हम जब भी लेटर लिखते हैं, हम लिखते हैं ना फ्रॉम टू. सो उसको कैसे लिखेंगे? फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन. जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं, व्हेनेवर वी गिव समवन समथिंग, देन ऑल्सो वी से दैट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी to you for your marriage, for your anniversary, for your birthday, whatever it is. So हम from and to को भी generally एक साथ use करते हैं. He usually works from 8 a.m. in the morning to 5 o'clock. But यहाँ पर काफ़ी टाइम लोग until 5 o'clock भी लिखते हैं. But we can use to also. She played the piano from 10 to 12. So जब भी हम from to यूज़ करते हैं, so from what time did we start and to what time did we stop. So from and to can be used in that case as well. Now sometimes to noun के पहले भी आता है. For example, I am listening to music. Now guys, this can be confusing. So listen to this very carefully. Listening verb पहले आ जा रहा है, यहाँ पर activity पहले हो रहा है, नाउन बाद में हो रहा है. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, एक्टिविटी से पहले हम टू यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी पहले आ रहा है और नाउन बाद में. सो हम जैसे टू नाउन के पहले भी यूज़ करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक. हम कभी नहीं बोलेंगे आई एम लिसनिंग म्यूज़िक. वी ऑलवेज से वी आर लिसनिंग टू म्यूज़िक. नाउ द डील अपील्स टू सुजैन. मतलब उसको ये डील अच्छी लगी, उसको भाया. सो वी विल ऑल्सो यूज द डील अपील्स टू सुजैन. ही वॉज अपीलिंग टू सुजैन. उसने उसको प्लीड किया.
He was pleading to Susan. So यहाँ पर activity पहले, to बाद में, और फिर उसके बाद noun. So these are the places also. For example, इसको हम कैसे बोलेंगे? Phrasal verbs basically. इसको phrasal verbs बोलते हैं. I will look forward to something. I will look forward to something. So look forward is an activity which comes before, and something is a noun which comes after to. So these are all called phrasal verbs. Object to something. I am objecting to something. So object, activity to something. Suppose I say I object, your honor. So उसकी जगह पे हम बोलेंगे he objected to the appeal that was presented in front of the court. So यहाँ to okay, good. So here were the few different usages that I could come up with the usage of the preposition to. Now there are many more examples. For example, to great extent he was doing good, to some extent, to tell you the truth. So these are all correlated to each other. So basically what you need to remember is 4 to 5 places wherein the to preposition is a must to be used. Before you're going for an activity, but you have to ensure कि आप वहाँ पर ing नहीं लगा रहे हैं. You will never say I'm going to playing. No, I'm going to play. Okay, then you can use to, from and to. That was the third one actually, from and to. Second one was that was third one, sorry, as I said. Second one was direction. आप जब भी कहीं के लिए भी निकल रहे हो, चाहे वो उड़ के जाओ, चल के जाओ, टैक्सी में जाओ, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो. So you will use to. I'm going to the market, I'm going to the airport, I'm going to Mumbai, wherever there is a movement. So movement means you will use to. Fourth one was time. When you are the exact time, so you can use to. It is 5 minutes to 10, it is 2 minutes to 11. So this is how you can use to. Now, these are the basic usages of to that I could come up and explain with, but there are other usages of to which will round up into these 4 only. So just remember these 4. It is very important, and you will be, finding it very helpful to use these sentences with the preposition to. I'm running out of words, guys. I'm so sorry. बहुत गर्म है. Anyways, so what I wanted to say is, if you come up with any more examples, write down in the comment box. Let me know. I will definitely come up and explain it to you. And guys, please like, share, and subscribe. I don't like begging you guys in each and every video of mine, but please like, share, and subscribe. Let others also take help as you guys are taking it, and love me. Bye bye. See you.